ओम अस्य श्री कालिका कवचस्य भैरवऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकालिका देवता शत्रु संहारार्थ जपे विनियोगः। ध्यानं ध्यायेत कालिं महामाया त्रिनेत्रां बहुरूपिणी चतुर्भुजां लल्लज्जिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पल्लदलश्यामां शत्रुसंगविदारिणी नरमुण्ड तथा खड्गं कमलं च वरं तथा निर्भयां रक्तवदनां दंष्ट्रालिघोररूपिणी साट्टहासनानां देवीं सर्वदा च दिगम्बरीं शवासनस्थितां कालीं मुण्डमालाविभूषिताम् इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत्। कवचपाठ प्रारंभ। ओम कालिका घोररूपा सर्वकामप्रदा शुभा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाश करोतु मे। ओम ह्रीं ह्रीं रूपिणी चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणी तथा ह्रां ह्रीं छौं छौं स्वरूपा सा सदा शत्रुन् विदारयेत्। श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्धविमोचिनी ह्रूं रूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवी सर्वदा यया शुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरः वैरिनाशाय वन्दे तां कालिकां शङ्करप्रियां ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्येन्द्री च चामुण्डा खादन्तु मम विधिवशः। सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्डविनाशिनी मुण्डमालावृताङ्गी च सर्वतः पातु मा सदा। ह्रीं 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 कालिके घोरे दंष्ट्रे च वा रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनी मम शत्रुन् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय भिन्धि भिन्धि छिन्धि छिन्धि उच्चाटे उच्चाटे द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। ह्रां ह्रीं कालिकाय मदीय शत्रून् समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय क्री क्री किटी किटी कट कट मंद मंद मोहय मोहय हर हर मम रिपुण ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानान् चामुण्डे सर्वजनान् राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मे श्वान् गजान् रत्नानि दिव्यकामिनी पुत्रान् राजश्रियं देहि यक्ष छां छिं छुं छें छौं छः स्वाहा। इत्येतत् कवचं दिव्यं कथितं स्वम्भुडां पुरा ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नशयन्ति शत्रवः वैरणिः प्रलयं यान्ति व्याधिता वां भवन्ति हिं बलहीनाः पुत्रहीनाः शत्रवस्तस्य सर्वदा सहस्रपठनात् सिद्धिः कवचस्य भवेत् तदा तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शङ्करभासिताम् श्मशानाङ्गरमादाय चूर्ण कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्ट्वा तल्लिखेल्लोह शलाकया भूमौ शत्रुणहीनरूपानुत्तरा शिरसस्तथा हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तुं स्वयं पठेत् शत्रो प्राणप्रतिष्ठां तु कुर्याण मन्त्रेण मन्त्रवित्तहन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रो गच्छ यमक्षयम् ज्वलदङ्गरतापेन भवन्ति जडिता भृशं प्रौञ्च नैर्वां पादेन दरिद्रो भवति ध्रुवं वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं परमेश्वर्यदं चैव पुत्रपुत्रादिवृद्धिदं प्रभातसमये चैव पूजाकाले च यत्नतः सायकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् शत्रुरुच्चाटनयाति देशाद् वा विच्युतो भवेत् पश्चात् किङ्गपकड़तामेति सत्यं सत्यं न संशय शत्रुनाशकरे देवी सर्वसम्पत्करे शुभे सर्वदेव अस्तु ते देवी कालिके त्वां नमाम्यहम्।